inspired from the jeweled ornamentation, which we have actually been specializing last 26 years. This has been our forte, and this is the kind of, I'm an artist by profession, and I lend my sensibility into my artwork, and that's the reason my artworks speak volumes. That's because of the artistic tendency in me, which tends to get into details when it comes to designing a couture garment. What do you want to say about GICW season 2023? It's a great platform, and it's good that they have taken like little details into consideration, which kind of adds up to a beautiful show. I think it's a fantastic start for the new year, and I think it was a great presentation, great venue, great organizers. You saw it yourself; it was beautifully planned, and all that whole space given. I think all thanks to him right here. हम लोगों ने आज हमारा जो Renaissance Victorian collection था, it was basically another thing what we took in stand was कि everything is not related to खाली bride के लिए, even all the other occasions जो attend कर रहे हैं, cocktail outfits and for destination weddings. So Anjalee, Arjun is a very, very glamorous collection. I mean, with the kind of stuff that we do, it appeals to the glamorous clientele, and it's themed Jewels Are More. And the essence is very Victorian Renaissance. It has been since my childhood, and it's very, very reflective on what I do. Whether it is, every little detail is inspired from the Victorian era. A great show. It took like 3 days shows. Let's see, 19 designers. 19 designers. 6 international designers and most of all Indian designers. It's the most global platform for international designers come to India and showcase your design. It's the main platform. I don't reveal any name. The suit is always coming. You can watch. Let's see whatever you want. Then you can media. You have to highlight my show. Then you want. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सौम्या जी हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत फैशन शो चल रहा है और यहाँ पर मैम अभी रैंप में चली हैं। तो मैम जी, जो आने वाली जो बच्चियाँ हैं के लिए क्या मैसेज है, ताकि वो भी इसी तरह कोई नया प्लेटफार्म चुने जैसे आपने चुना है? मैं चाहती हूँ कि हर लड़की सपने देखना बंद ना करे। जब तक आप चांद तारों को नहीं देखोगे तब तक आप, मेरे को लगता है, आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हो। सो बी हार्ड वर्किंग, बी एम्बिशियस, सपने देखो और लगे रहो। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे, लेकिन यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग ऑन। इस तरह का जो प्रोग्राम है मैम जी, ये सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं। जो हमारा रूरल एरिया है, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, वहाँ भी बच्चियाँ स्वप्न लेती हैं, बच्चे स्वप्न लेते हैं कि हम भी इस तरह से बने, जो मॉडल होते हैं की तरह हम भी बने। तो उस रूरल एरिया के लिए क्या मैसेज है उन बच्चियों के लिए? देखो, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। हमारी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा काम दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में होता है। तो एक वो बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, घर से लड़के, घर वालों को मना के एक बड़ा स्टेप लेके एक नए शहर में आना पड़ेगा। चैलेंजशिप नहीं होना तो ठीक है, पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन आके रिस्क लो, मेहनत करो और नए लोगों से मिलो, और इसी के साथ आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, रिगार्ड्स। नमस्कार दोस्तों, फरनाज सेठी जी हमारे बीच में हैं। GICW के एक फैशन शो में मैम ने शिद्दत दी है और यहाँ पर रैंप में मैम चली। तो मैम जी, जो रूरल एरिया में जो बच्चियाँ हैं, जिनको अपना भविष्य बनाना होता है, आपका तो बन चुका है, उन बच्चियों के लिए क्या संदेश है ताकि वो भी इस ऐसा प्लेटफार्म चुन सकें और इस तरह से आपकी तरह कामयाब हो सकें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें गॉड एक ही लाइफ देते हैं, और अगर हम कोई ख्वाब देखते हैं तो हमें पूरी शिद्दत से मेहनत करके उस ख्वाब को पूरा करना चाहिए और खुद पे बिलीव करना चाहिए कि आप कर सकते हैं। तो छोटे शहर और बड़े शहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को अच्छे से ट्रेन करके आप भी आगे आ सकते हैं। लेकिन मैम जी, इस तरह के प्लेटफार्म जो हैं बड़े शहरों में ही मिल पाते हैं। छोटे शहरों में जो हमारा रूरल एरिया है, वहाँ पर ये ना कोई डिज़ाइनर पहुँच पाता है, ना कोई बड़े जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो वो कैसे यहाँ तक आए, उनके लिए एक संदेश है आपका? बहुत सारे एजेंसीज़ होते हैं और प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जिनको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर उनके लिए करेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है,
लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ आजकल घर से होने लगा है, जी। तो आपको कहीं ऑफिस में जाना नहीं पड़ता, घर से ही हो जाता है सब कुछ। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं या शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप आगे की तैयारी शहर में आके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you. रिगार्ड्स।
show was nice? And it all comes from party and occasion. I know like how everyone loves to go out, and when you do go out you never have like enough of party wear dresses. So my only idea behind the entire collection was just that, like full of life, full of energy, full of embellishment, that when you go out you make a statement in these clothes. Right. I want to ask her, like, are you feeling comfortable in it? Yeah, very much comfortable, and luckily it's fitting me so well. Also, it's so light on the body and comfortable. That's the first thing we see in an outfit. So, commendable. Thank you. You're the founder of GIC. My God. It's my global property. So many international designers who come from India. Okay. So many Indian designers go to out of India. Right. My thinking is come outside people in India because it's my India. हमारा देश बढ़ाना है. बढ़ाना है. Yeah. That's the my main thing. जितने भी बाहर के डिजाइनर्स हैं वो यहाँ पे इनको अब इंडिया में प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो अपना शोकेस इंडिया में करते कि इंडिया की ग्लोबल वैल्यू बढ़े. That means GICW Global India with your way. Like he said, the idea and the vision behind curating and creating GICW is to change the vision and the outlook of how India is looked at when it comes to the point of view of fashion. Right. And that's the reason we, curated this lovely collaboration of FTV Sopa South Delhi and our lovely designer Aashna Vohra. And what we wanted to do was focus the point of an importance of education in India when it comes to fashion, and showcase what our young talent in the country can do when given the right platform. And I think there wouldn't be another opportunity like this where education brand like FTV Sopa South Delhi and a very young and beautiful, gorgeous, talented designer like Aashna come together to curate this lovely collection showpiece. And that too, the cherry on top, we had a lovely Miss Shetty coming and honoring us with her presence. And I don't know how much I need to thank her, but I would officially on air like to thank both The of only them. challenge is the weather right now. Yes. अच्छा लगा है हाँ कर. This is the first time I have been to GICW, and it was an amazing experience. Yes, I have walked the ramp in the past, but this experience was really warm and very fresh. Like today's collection, I would say, and Aashna has done a great job. The only challenge is the weather right now. But yeah, as far as the outfit is there, like it's beautiful. And I am finding myself really pretty in it. बहुत अच्छा माहौल था, and I'm glad कि हम कोविड के उस स्पेस से बाहर निकल पाए, and we are doing and exploring new side and new creativity. And काफ़ी अच्छा इनको response मिला. Friends, family and a lot of well-wishers were there, sitting there and cheering up. So the feeling and the vibe was really good. Designer, we just finished up my show, and I really want to say thank you to GICW for giving us such a warm welcome and letting me do this show, because it's my first show ever, and I couldn't have been happier to do this with her and to showcase my collection this way. The team has been so warm and everyone's been so nice that for a new designer like me, it's a great platform to be at. The organizers are great. They have been so helpful, and literally they've been like my family. I literally got very short time to pull this up, but without their support it would have been the same. And she has looked stunning. She made my outfit look even better. So her outfit, so we do basically corset wear, and it gives you like the right waist and the right curves. It enhances your posture and everything. So I think she looks brilliant in it, and I couldn't be happier. Oh. Very nice.